விக்ரம் லேண்டர் மாலை 6 நாளுக்கு நிலவின் தென் துருவ தரைப்பரப்பில் அதிதுல்லியமாக தர இறங்கி உலக நாடுகள் அனைத்தும் வியக்கும் வண்ணம் சரித்திர சாதனை படைத்துள்ளது. முன்னதாக 8 பிரிவுகளாக இந்திய விஞ்ஞானிகள் பெங்களூர் இஸ்ரோ கட்டுப்பாட்டு மையத்திலிருந்து கொடுத்த அத்தனை கட்டளைகளையும் துல்லியமாக ஏற்று சிறப்பாக குறித்த நேரப்படியே தர இறங்கி உள்ளதுதான் உலக நாடுகள் அனைத்தையும் வியப்புக்குள்ளாக்கி உள்ளது. நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னர் நமது தமிழ் பாட்டன் பாரதியார் வானை எழப்போம் கடல் மீனை எழப்போம் சந்திர மண்டலத்தியல் கண்டு தெளிவோம் என்று தீர்க்க தரிசனமாக கவிதை பாடினார். அவரது தீர்க்க தரிசனத்தை நமது தமிழக விஞ்ஞானிகள் பலரும் முன்னிலை ஏற்று செயல்படுத்திய இந்த பெருமைக்குரிய சந்திரயான் 3 திட்டம் செயல்படுத்தி நனவாக்கியுள்ளது. வருங்காலத்தில் ககன்யான் திட்டம் மூலம் நிலவுக்கு மனிதனை அனுப்பும் செயல் திட்டத்திற்கு இந்த விக்ரம் லேண்டர் அடித்தளம் அமைத்து விட்டதுதான் நமக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய ஒரு பெருமையாகும். சந்திரயான் 2 அதனுடைய அந்த விக்ரம் லேண்டர் முன்பே தரையிறங்கி தோல்வியை அடைந்து விட்டது. அது நேரடியாக நிலவில் சென்று மோதிவிட்டது. அப்பொழுது நமது இந்திய விஞ்ஞானிகள் சோர்ந்து போய்விடவில்லை. அவருக்கு நமது பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் மிகுந்த உற்சாகமும் ஊட்டி நிச்சயம் நாம் இதைவிட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாதனைக்கு தயாராகுவோம் என்று சொல்லி அவர்களை தயார்படுத்தினார். அவர் அளித்த அந்த ஊக்கமும் இந்திய மக்களின் பெருவாரியான அந்த ஆதரவும் தான் இன்றைக்கு இந்த ஒரு மிகப்பெரிய இந்த வெற்றியை சாத்தியமாக்கி கொடுத்துள்ளது. இன்றைக்கு இந்தியாவின் எதிரி நாடுகள் மட்டுமல்ல, இந்தியாவே என்னவென்றே தெரியாத ஒரு உலக நாடுகள் கூட இந்திய தேசத்தை திரும்பி பார்க்கின்றன என்று சொன்னால் அதற்கு அடித்தளம் அமைத்துள்ளது இந்த சந்திரயான் 3 செயல் திட்டம். எனவே இந்த செயல் திட்டத்தில் ஈடுபட்டு நிலவின் தென் துருவத்தில் தனது விண்கலத்தை தர இறக்கி மாபெரும் சரித்திர சாதனையை படைத்து வரலாற்றில் பெருமை தேடி தந்துள்ள அனைத்து விஞ்ஞானிகளுக்கும் மனம் மெய் மொழிகளால் வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்து நாம் அனைவரும் அவர்களுக்கு வாழ்த்து செய்திகளை பகிர்வோம். அனைவரும் இந்த யூடியூப் சேனலின் வழியாக உங்களுடைய கருத்துரைகளை பகிர்ந்து நமது இந்திய விஞ்ஞானிகளை நாம் பெருமைப்படுத்துவோம். அவ்வளவு மேற்கொண்டு என்ன பேசுறீங்க பேசுங்க. நம்முடைய துரிகைஜாலம் யூடியூப் சேனல் குழுவின் இருந்து இந்த சிறப்பான செய்திகள் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. விக்ரம் லேண்டர் 3 நிலவில் தென் துருவத்தில் வெற்றிகரமாக தரையிறங்கும் அந்த நேரடி காட்சி இங்கு ஒளிபரப்பப்படுகின்றது. நாம் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஏன் உலக நாடுகள் அனைத்தும் விழிமேல் விழி வைத்து இது எப்படி நிகழ்கிறது என காண்பதற்கு ஆவலாக இருக்கக்கூடிய அந்த காட்சி இதோ நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. நம்முடைய துரிகைஜாலம் யூடியூப் சேனல் பக்கத்தில் இந்த காணொளி இப்போ ரெக்கார்ட் செய்யப்பட்டு உங்களுக்காக வழங்கப்படுகின்றது. ஏனென்றால் இது ஒரு வரலாற்று சாதனை. இந்த வரலாற்று சாதனையை நம்முடைய யூடியூப் சேனல் வழியாக பதிவு செய்ய வேண்டும் என்பதில் மிகுந்த ஆவலோடு இருந்ததனால் இந்த நேரடி காட்சிகளையும் உங்களுக்காக பதிவு செய்து நம்முடைய சேனலினூடாக
வழங்கி வந்து கொண்டிருக்கின்றோம். நீங்கள் அந்த காட்சிகளை இங்கு பார்த்து கொண்டிருப்பீர்கள். காட்சி மகிழ்வதற்கு. ஏனென்றால் இன்னும் நிறைய நம் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய அனைவருமே விஞ்ஞானிகள் என்றுதான் நான் சொல்ல முடியும். யாரையுமே குறைத்து மதிப்பிடுவதற்கு இல்லை. இந்த செயல் திட்டம் வெற்றி அடைவதற்கு தமிழர்கள் முக்கிய பங்காற்றி இருக்கின்றார்கள் என்ற செய்தியையும் நாம் சொல்லி பெருமைப்படுவதில் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். ஏனென்றால் விஞ்ஞான சாத்திர சித்துக்களில் தமிழர்களின் பங்கு இன்றியமையாதது. இன்று மட்டுமல்ல, என்றைக்கு இந்த நிலம் தோன்றியதோ, கல் தோன்றி மண் தோன்றி காலத்து முன் தோன்றிய மூத்த குடி தமிழ் குடி என்று சொல்வது போல், என்றைக்கு நமது தமிழ் குடி தோன்றினார்களோ அன்றைக்கே வானியல் சாஸ்திரங்களிலும் வெற்றி கண்டுள்ளனர். அந்த பழமையான முறைகளையும் ஆன்மீகத்தையும் ஒருங்கே பின்பற்றி மிக அற்புதமாக விஞ்ஞான முறைப்படியும் ஆன்மீக முறைப்படியும் இந்த விக்ரம் லேண்டரை வடிவமைத்து நிலவுக்கு நம் இந்திய தேசம் அனுப்பி இருக்கின்றது. இன்றைக்கு மாபெரும் சாதனை படைத்திருக்கின்றது. ஏதோ அறிவியலின் துணை மட்டும்தான் இதில் இடம்பெற்றிருக்கின்றது என்றில்லாமல் ஆன்மீகம் கலந்த விஞ்ஞானத்தோடும் இது செயல்பட்டு இருக்கின்றது என்பதுதான் பெருமை. அதைவிட மேலான பெருமை என்னவென்றால், நம்முடைய பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடி அவர்களின் ஊக்கம், தளராத ஊக்கம் நம் இந்திய தேசத்தை தலைநிமிர செய்துள்ளது. அவர் மேலும் நமக்கான ஊக்கத்தை வழங்கியிருக்கின்றார். இன்னும் நிறைய கிரகங்களுக்கு நம்முடைய வெற்றி பயணம் தொடரும் என்றும் தெரிவித்திருக்கின்றார். சந்திரனை இதுநாள் வரை நம் அன்னை நமக்கு உணவு ஊட்டும் போது நிலா சோறு ஊட்டி நமக்கு காண்பித்தார்கள். இன்றைக்கு அந்த நிலாவிலேயே நம்முடைய கால் பதியும் அளவுக்கு தொடர்புகள் ஏற்பட்டுவிட்டன. நிலா வெகு தொலைவில் இல்லை, நாமும் சென்று பயணிக்கும் தொலைவில் தான் உள்ளது என இந்த சந்திரயான் 3 நமக்கு நிரூபித்து விட்டது. எதிர்வரும் காலங்களில் நாம் ஏதாவது சுற்றுப்பயணம் போக வேண்டும் என்றால் நிச்சயம் நிலாவுக்கு கூட சுற்றுப்பயணம் சென்று வரலாம். அந்த அளவுக்கு வசதிகளையும் நம்முடைய இந்திய தேசம் நமக்கு வழங்கும், அந்த வாய்ப்பு நமக்கு கிடைக்கும் என்று அசராத நம்பிக்கையோடு இந்த காட்சிகளை உங்களோடு சேர்ந்து நானும் மகிழ்ச்சியாக பார்த்து கொண்டிருக்கின்றேன். இந்த அற்புதமான காட்சி இங்க நம்முடைய இஸ்ரோ வானியல் ஆராய்ச்சியிலிருந்து நேரடி ஒளிபரப்பு. அந்த நேரடி ஒளிபரப்பை நாம் அப்படியே ஸ்கிரீன் ரெக்கார்டர் செய்து உங்களுக்கு வழங்கி இருக்கின்றோம். இந்த அற்புதமான காட்சி பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப ஒரு நல்ல ஹாலிவுட் படத்தையே மிஞ்சின அளவுக்கு அந்த லேண்டர் இறங்குற அந்த நிறுத்தி அந்த லேண்டர் இறங்குற விதம் அப்படியே ஸ்லோ மோஷன்ல ரொம்ப 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 பிரமாதமா இருக்குது. எங்கேயோ ஒரு நிலா ரொம்ப கண்ணுக்கு தெரிகிற தூரத்துல இருக்கிற அந்த கோள், அங்க ஒரு காட்சி நடக்குது, அதையும் படம் பிடிச்சு நமக்கு இவ்வளவு தூரத்துக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதையெல்லாம் நம்ம பார்க்கறதுக்கு நல்ல குடுப்பனை தான் இதெல்லாம். இந்த காட்சிகளை நீங்களும் பாருங்க. लैंडर के सटीक पोजीशन और वेलोसिटी का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। लिराव यानी लेजर इनर्शियल रेफरेंसिंग एंड एक्सीलरोमीटर पैकेज इस कार्य को पावर एडिशन के दौरान
हर ऑर्बिट मैन्यूवर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की मिशन ऑब्जेक्टिव बराबर हो। इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि ऑर्बिट डिटर्मिनेशन, जो कि उपग्रह के पोजीशन और वेलोसिटी को बहुत ही एक्यूरेटली बताता है, एक बहुत ही कठिन और जटिल कंप्यूटेशन और एस्टिमेशन होता है। यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 2 का OHRC पेलोड अब तक काफ़ी ऊंचे स्तर का डैम प्रदान किया है, जिसके फलस्वरूप लैंडिंग साइट की सीमा को बढ़ाकर 4 × 2.4 किलोमीटर कर दिया गया है, जो कि पावर डिसेंट के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग कराने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। Apart from the sensors, Chandrayaan-3 is equipped with a suite of sophisticated payload instruments. While Chandrayaan-1 and Chandrayaan-2 orbiter have provided abundant remote sensing data, important are the on-site localized measurements that provide ground truths. Lander and rover have payloads which are completely new and will perform in situ analysis of lunar surface. The two spectroscopes on rover, APXS and LIBS, will actively measure the surface elemental abundances at the landing location and surrounding area. The lander carries a seismometer ILSA that can sense impact events and lunar quakes. 680 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। We have continuous flow of lander telemetry data from ISRO's Deep Space Network IDSN-32 located in Belalu, Bengaluru. The data is being acquired real-time by station and is flown to the Mission Operation Complex through our communication links. In addition to it, we also have support from ESA and JPL DS
power descent has begun and the lander module is propelling towards the moon's surface along the intended trajectory. जी हाँ, अब हम देख सकते हैं रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। During this rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough braking. All this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the Laser Inertial Reference and Accelerometer package (LIRAP) is aiding in the navigation. जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर अब तक कुल 191 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल दिशा में चल चुका है और अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है। The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. The complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं। पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है। The altitude of the lander module will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers. During the next phase, which is going to be the attitude hold phase. We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. आरयूसीसी अभी हम इस ग्राउंड ट्रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड ट्रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है। अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल लगभग 370 किलोमीटर क्षैतिज दिशा में चल चुका है। The mission operations team is analyzing the data. We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analyzed. The performance so far seems to be nominal. जी आरुषि, चूंकि एएलएस एक्टिवेट किया जा चुका है इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इस दौरान आपके स्क्रीन पे सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं। इस मिशन में सेकेंड और थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। During the entire descent, there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. 80 मीटर पर सेकंड थी, लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए।
यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि द लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है, और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करंट आल्टीट्यूड की, तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं Chandrayaan-3 lander imager display. The lander imager is continuously taking photographs of the moon's surface, and that is also being streamed here. Currently the horizontal velocity has been brought down and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है, करीब करीब 26.7 किलोमीटर के आसपास है। The next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently we are in the middle of the rough braking phase. जी हाँ, अगर ध्यान से देखें तो लगभग 8 से 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई, अभी की ऊंचाई के समय 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। The altitude of lander from ground is currently 12 kilometer. Is currently 22 kilometer, which is again going to be coming down, and that is expected. For the viewers who have joined now, we are in the power descent phase and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the power descent. We have currently traveled a downrange of 697 kilometers, and the downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। At the same time, we can see the altitude of the lander is just 17.8 kilometer from the moon surface, which is going to be around 7.4 at the end of the rough braking phase. इस फेज के बाद हम जाएंगे towards the attitude hold phase, where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. जी हाँ, इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है।
After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. जी हाँ आरुषि, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करंट आल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। जी हाँ, हम अपने हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं। Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. जी हाँ, आप ये देख सकते हैं एल्टीट्यूड होल्ड फेज भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेज ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally and we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग 0 होगा। We can see the visual of the lander module and we can see that the downrange traveled is nearly 831 kilometers. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा के सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेज के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude
altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए होवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced and the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2 which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं जो कि सेकंड हाइवरिंग फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, अब अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार सर वी हैव अचीव्ड soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I
I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत के जयघोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्र पथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत में नई ऊर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है। ये क्षण भारत के उदयमान भाग्य के आह्वान का है। अमृत काल की प्रथम प्रभा में सफलता की ये अमृत वर्षा हुई है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। साथियों, मैं इस समय ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में हूं, लेकिन हर देशवासी की तरह मेरा मन चंद्रयान महाअभियान पर भी लगा हुआ था। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। हर घर में उत्सव शुरू हो गया है। हृदय से मैं भी अपने देशवासियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस उमंग और उल्लास से जुड़ा हुआ हूं। मैं टीम चंद्रयान को, इसरो को और देश के सभी वैज्ञानिकों को जी जान से बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्रम किया है। उत्साह, उमंग, आनंद और भावुकता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोड़ देशवासियों को भी कोटि कोटि बधाइयां देता हूं। मेरे परिवारजनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे और नई पीढ़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी।
भारत में तो हम सभी लोग धरती को मां कहते हैं और चांद को मामा बुलाते हैं। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। फ्रेंड्स, on this joyous occasion, I would like to address all the people of the world, the people of every country and region. India's successful moon mission is not just India's alone. This is a year in which the world is witnessing India's G20 presidency. Our approach of one earth, one family, one future is resonating across the globe. This human-centric approach that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity, and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवारजनों, चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। साथियों, साइंस और टेक्नोलॉजी देश के उज्जवल भविष्य का आधार है। इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। यह दिन हम सभी को एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धि का रास्ता दिखाएगा। ये दिन
इस बात का प्रतीक है कि हार से सबक लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है। एक बार फिर देश के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के मिशन के लिए ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Adharaniya Pradhan Mantri ji, for being part of our journey to this success. And let me take this opportunity to thank the people behind this mission, the project director of Chandrayan3. He is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Srikanth. And the satellite was built at your house satellite center, Shankar and the director. This goal as project director of this mission. The entire mission operations right from launch till landing happened flawlessly as per the timeline, and we became the 4th country to land to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to near to the south pole of the moon. I take this opportunity to thank navigation, guidance and control team, propulsion team, sensors team and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. I also take the opportunity to thank the Critical Operations Review Committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date. The target was on spot because of the review process. I also thank the ISRO higher management, right from Chairman ISRO, Director URSC and all the center directors and higher ISRO officials. And finally, my thanks to the Chandrayan3 project executives spread across the ISRO centers. Thank you. Mission Director Srikanth. It gives me an immense pleasure to be part of Chandrayan3 and acting as Mission Director. I would like to thank each and every team member who has supported in carrying out all the mission operations flawlessly, and I would like to thank my senior management, Chairman ISRO, Director URSC, my senior colleagues and my team members for carrying out and supporting all the things carrying out in proper way. Thank you very much. Associate Project Director Kalpana. Good evening to all. This will remain the most memorable and the happiest moment for all of us, for our team Chandrayan3. We have achieved our goal flawlessly. From the day we started rebuilding our spacecraft after Chandrayaan-2 experience, it has been breathe in, breathe out Chandrayaan-3 for our team. And starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously, and this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan-3 team, and of course with the guidance from our Chairman ISRO, our directors and all our experts. With all this, it has been possible. Thank you one and all. Thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of departments. Thank you. Thank you. Chandrayaan-3 is a result of the work done by thousands of
scientists, engineers, our staff and industries and support team across ISRO and other places, other institutions. And Shankaran has been the lead of the center which integrated all of these efforts in the last so many years. So I request him to speak on behalf of all of you. Thank you very much for the affection that has been displayed today now. Today we have achieved what we set out to achieve in 2019. It was delayed by about 4 years, but we have done it. When Chandrayan3 was launched, after the separation of the spacecraft from launch vehicle, I said I will speak the rest of the things after the soft landing. So here I will take a couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team. When I say project team, it is not just only the project director and associate project director. Of course, they are the face of the project. They have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last 4 years. They have been supported by such a large number of people, particularly in the navigation, guidance and control area, propulsion system. This area, the amount of effort that has been put by people, the number of simulations that have been done, the number of reviews they have gone through, the amount of criticism they faced and overcome that. It is, as a person who has been watching this for the last 4 years along with them, my heart goes out for them. The amount of effort is tremendous. That is what ISRO is all about. That is what our organization has taught us to do. Now today this success has put us even more higher responsibility, as the Honorable Prime Minister was telling, because we have set the bar now so high. Nothing less than nothing less spectacular than this is going to be inspiring for any of us in the future. So as the Honorable Prime Minister mentioned, we will be now looking at putting the man in space, putting a spacecraft around Venus and landing a craft in Mars. Work on all these activities are going on for few years, and this success today will inspire us and will spur us to take those efforts even more strongly, so that we will make our country proud again and again and again. Thank you very much for every one of you who have directly or indirectly participated in this mission, encouraged us, intentionally or unintentionally helped us in all for every one of you. A big thank you, because even casual remark, an unintended point can help a person who is striving to reach a goal. The person who is making that remark may not have meant it that way, but sometimes it can ignite that's why I said that even unintended help is very welcome, and we are very thankful for that. Thank you, Team ISRO, for supporting all of us. The amount of affection we received when this mission came into this final stage, the number of people who gave us confidence that nothing can go wrong and this is going to be successful. The amount, in fact, I was not that much confident, because we have seen a couple of times issues, because I know very well as a person who has been doing in this domain for 36 years, I know there are thousands of things. Any of that can anytime go wrong and derail, but so many of the people, because
that I only see as the reflection of the effort we have put, that people are so happy to see this effort and they want us to succeed. It is not that they know that we are going to succeed. The people want us to succeed. So thank you very much for everyone for your love and affection. We will continue to do our best and make our flag fly, ISRO's as well as India's flag fly high. Thank you very much. Honorable Prime Minister called me and conveyed his greetings to each one of you and your family for the wonderful work you did in ISRO. So thanks are to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayan3 and the missions that are in the offing. I think that's a great word of comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation. I want to tell you, and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days, who wanted this success in ISRO. I thank all those people all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years. I want to specifically thank some senior people who have been standing with us, especially the name of Kiran Kumar sir and Mr. Kamalakar, Sri Koteshwar Rao. They have been helping so much. They were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure that nothing goes with any mistakes. And of course, this is not the work of us alone. This is the work of a generation of ISRO leadership and ISRO scientists. And this is a journey we started in Chandrayan 1, continued in Chandrayan 2, and Chandrayan 2 craft is still working and doing a lot of communication work with us. And all the team that contributed to building Chandrayan 1 and Chandrayan 2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayan 3. And this is an incremental progress and definitely a great, huge one it is. And thank you so much for all the support and work that you have done. Thank you.